हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और दिवाली की हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। वर्ल्ड कप काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है। आई मीन वी आर डन विद ऑल द लीग मैचेस एंड नाउ वी हैव सेमीफाइनल्स विच आर शेड्यूल्ड टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। पहला सेमीफाइनल इज़ बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो आज हम इस मैच के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजीज होंगी, पिच कैसे होने वाली है, वेदर कंडीशन कैसे होगी, व्हाट आर सम ऑफ द players from both the teams which all players are going to be the ace for their team। दोनों टीम्स के लिए क्या डेंजर हो सकता है, क्या थ्रेट हो सकता है एंड व्हाट कैन बी देयर स्ट्रेंथ। सो एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी होगी इस पर हम डिस्कस करेंगे। But again, before I start this video, I have this humble request. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। क्या आप उससे आई मीन डू यू अग्री विद दैट, या फिर आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है सो प्लीज़ मेंशन, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मुझे पता लगे कुछ और फैक्ट्स जो शायद मैंने कवर नहीं किए। दैट विल बी रियली ग्रेट। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हेल्प मी इन ग्रोइंग दिस चैनल सो दैट मैं और नए नए वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू। ग्रेट। सो जैसे मैंने बताया कि कल इंडिया इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। And if you look in last few years, New Zealand has been India's Achilles heels। नॉकआउट में न्यूजीलैंड ने इंडिया को काफ़ी परेशान किया है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो 2019 का दैट हार्ट ब्रेकिंग वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो, विच वॉज अनफॉर्चुनेटली महेंद्र सिंह धोनी's लास्ट इंटरनेशनल मैच, या फिर अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हो 2021 में। इंडिया लॉस्ट बोथ द मैचेस एंड definitely there are a lot of people are very nervous। Everyone is just praying exactly what's going to happen। Situation is I mean जो जनरल पब्लिक है वो न्यूजीलैंड से इतने आई मीन दे आर सो स्केप्टिकल दैट दे वर रेडी टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल, बट न्यूजीलैंड को अवॉइड करना चाहते थे। बट द वे मैचेस वेंट ऑन एंड Pakistan missed the semi-final opportunity, and hence India is going to play against New Zealand in the semi-final। टॉकिंग अबाउट बोथ द टीम्स, अब तक दोनों टीम्स की अगर जर्नी देखें, सो पहले हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे। न्यूजीलैंड स्टार्टेड ब्रिलियंटली इन दिस टूर्नामेंट। दे डिफीटेड last World Cup winners England in first match in Ahmedabad, and after that they won back-to-back 4 matches। Definitely they were top of the table। Then they lost against India, and everything they start losing। All of a sudden they were chinks in their armor, और इंडिया से हारने के बाद they lost 3 matches consecutively। In the end it was all in fact they lost 4 matches consecutively, and in the end they won the match against Sri Lanka और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते, जिससे उनके रन रेट बहुत अच्छी होगी, and then they qualified for the semi-final। So definitely as we all know that if we talk about New Zealand, and especially if we talk about this World Cup, definitely उनकी जो performance थी वो it was like कभी बहुत अच्छी कभी बहुत बुरी। कुछ एक मेजर हाईलाइट्स अगर हम बैटिंग की बात करें, सो रचिन रविंद्र इज़ डेफिनेटली फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। बहुत अमेजिंगली खेल रहे हैं वो, एंड ही हैज स्कोर्ड सम ब्रिलियंट रन्स अगेंस्ट टॉप ऑपोजिशंस, अगेंस्ट डिफिकल्ट बॉलिंग कंडीशंस। मिच सैंटनर उनके स्पिनर, ही इज़ बॉलिंग डिसेंटली वेल। काफ़ी और बैट्समैन हैं जो दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। सो
ये तो बात है न्यूजीलैंड की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ डेफिनेटली प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट, which I have seen them playing in a while now. They have won all the 9 matches in the league stages, and the best part is in none of the match opposition has any say. I mean, for the time, I mean for the small टाइम दे माइट बी इन द मैच, लेकिन कोई भी मैच ऐसा नहीं था जिसको आप कह सकते हैं कि भाई बराबरी का मैच था. आई मीन all the matches India just steamrolled, just dismantled opposition, and not talking about weaker teams. I'm talking about stronger teams. Whether you talk about Australian team, you talk about South Africa, you talk about England, you talk about Pakistan, New Zealand, tough match teams को भी उन्होंने defeat किया. And unlike South Africa, who struggled while chasing, and they they were unbeatable when they were batting first, लेकिन chasing में they struggled. India, चाहे वो उन्होंने फर्स्ट बैटिंग की हो या सेकंड बैटिंग की हो, हर मैच में they were very comfortable. They all were always someone who just stood up and ensured that India is winning. चाहे आप बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, बैटिंग में everyone is in form. Okay, agreed कि Shubman Gill has not scored a century. I mean, which he is famous for. He has scored a lot of centuries this year. But again, he had played some decent innings. चाहे वो श्रीलंका के against 90 odd runs हो या 50 odd runs हो. So he scored a few half centuries. Apart from that, you talk about Rohit Sharma, Virat, Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा भी जो जिस एक मैच में उनको अपॉर्चुनिटी मिली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ही प्लेड डिसेंटली वेल. सो ओवरऑल एंड नॉट टू फॉरगेट स्काई, जो उनकी छोटी इनिंग्स लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग्स उन्होंने खेली हर मैच में, दैट इज़ रियली इनक्रेडिबल. सो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली or everyone is in form. Similarly, अगर हम बॉलिंग की बात करें, so you talk about Bumrah, Shami, Siraj, Kuldeep Yadav, Ravindra जडेजा, सब बहुत अमेजिंग फॉर्म में. हर एक पांचों बॉलर्स की 10+ विकेट्स हैं, and with a good economy, good average. So bowling is also very strong. So definitely at this moment, India is the team to beat. But we all know that knockout is entirely different thing. जब हम knockout की बात करें, so सब कुछ अलग है. आप लीग मैचेस के आपकी सारी परफॉर्मेंस धरी की धरी रह जाती हैं, बिकॉज नॉकआउट में इट्स नाउ और नेवर. इफ़ यू लूज दैट मैच, आपका कैंपेन ओवर हो जाएगा. सो ये है इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के रिकॉर्ड इन दिस टूर्नामेंट. Great. Now, if we talk about matches which happened in Wankhede till in this World Cup, and what was the result, तो कुछ एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आएंगी. तो अब तक वानखेड़े में मुंबई में 3 मैचेस हुए हैं. इन फर्स्ट 2 मैचेस वो फॉर साउथ अफ्रीका. So first match में साउथ अफ्रीका ने they defeated Australia by a huge margin. Similarly, next match में South Africa again defeated Bangladesh by a huge margin. In fact, there are 4 matches which has happened. In third match, India defeated Sri Lanka by again a huge margin. And definitely in the last match, which was played in Wankhede, we saw one of the best World Cup innings played by Glenn Maxwell, and only because of his inning, Australia was able to defeat Afghanistan by 3 wickets. तो अगर आप ये पैटर्न देखें, so although सभी कहते हैं, I mean, dew is a very big factor in Wankhede, और ऐसा नहीं है कि and I have there were 2 very important matches I can give you example of, जो नॉकआउट थे और जिसमें ड्यू ने गेम एकदम बिगाड़ दिया. One match was in favor of India, one went against. So 2011 का World Cup final अगर आप देखें, so that was played in Wankhede, and definitely after initial shock, I mean India lost 2 wickets very quickly. Indian team was able to chase that target of 271.
if you have noticed, after 15-20 overs there was a lot of dew in Wankhede, and it was really very tough for Sri Lankan bowlers to bowl, and they lost. Similarly, in 2016 T20 World Cup, India played against West Indies, and India batted first. They scored 200 runs. However, as we know, T20 matches they start at 8 o'clock. So India की इनिंग ख़त्म होते होते there were a lot of dew, और वेस्ट इंडीज़ की इनिंग आई मीन तक तो बहुत सारा ड्यू था मैच में और पिच पे. एज अ रिजल्ट इंडिया कुड नॉट इवन डिफेंड 200 runs in a T20 match, and the only wicket which was fallen for West Indies was taken by Virat Kohli, a part-timer bowler. तो डेफिनेटली वानखाड़े में ड्यू का इम्पैक्ट बहुत रहता है, और इसलिए इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट बिहेव्स. लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड कप में देखें, सो सारे मैचेस जिस टीम ने फर्स्ट बैटिंग की, दे वॉन. आई मीन दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट ऑपोजिशन, एंड सिर्फ जीतना ही नहीं, बहुत ही आई मीन दे डिफीटेड वेरी कन्विंसिंगली. सो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो पहले मैच में, बांग्लादेश श्रीलंका हो, सिर्फ थर्ड मैच में वो भी अगर मैक्सवेल वो अपनी अनबिलीवेबल इनिंग नहीं खेलते हैं, सो डेफिनेटली अफगानिस्तान वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ विनिंग दैट मैच और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे थे. सो डेफिनेटली जो इन मैचेस से जो इंडिकेशन है, दोनों कैप्टन्स दे वुड लव टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. बट अगेन लाइक आई सेड, इट कैन बैकफायर. मैंने आपको 2 एग्जाम्पल अभी दें. सो इट कैन बैकफायर. सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली सेकेंड इनिंग में पहले 1-1.5 घंटे इट विल बी टफ फॉर बैटिंग, एंड लेट मी टेल यू व्हाई. जो सेकेंड इनिंग आपकी शुरू होती है वो 6:30 शुरू होगी. 6:30 से लेके करीब 8 बजे तक बॉल काफ़ी स्विंग होती है, एंड द रीज़न इज़ वानखाड़े इज़ एट द बैंक ऑफ अरेबियन सी, और जिसके कारण शाम को बहुत प्यारी ब्रीज आती है, एंड इट रियली हेल्प्स बॉलर्स इन स्विंगिंग द बॉल. आप अगर देखें तो चाहे वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हों, या फिर अगर आप देखें इंडियन बॉलर्स, हाउ दे डिसमैंटल्ड श्रीलंका. आई मीन श्रीलंका हैज़ नो क्लू what to do, how to do against India. So definitely अगर वो 1-1.5 घंटे आप I mean you are able to sustain, I'm talking about अगर आप सेकेंड इनिंग की बात करें, so definitely ग्राउंड पे इतना ड्यू होगा कि चाहे आपको 10 की भी रन रेट चेस करनी पड़ेगी, you will be able to win. Okay? लेकिन जो ये 1 घंटे का या 1.5 घंटे नहीं तो 1 घंटा, तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं अराउंड 15-16 ओवर्स. बॉल स्विंग होगी, दोनों न्यू बॉल हुए हैं, एंड whether you talk about India, you talk about Newzealand, both teams have amazing quality swing bowlers. तो ये दोनों टीम को ये सोचना पड़ेगा, and definitely when teams are batting first, there is always I mean they face a difficulty while doing it. It's not that easy to do that. So what is expected? So एक चीज़ आपने definitely देखी होगी. I mean there are a lot of captains who leave the toss. I mean sometimes they pray that they should not win the toss, or I mean so that जो भी आए they can be ready for it. So definitely अगर आप देखें तो दोनों I mean in both situations, whether you bat first or bat second, you have some positives. You will get some you will get some positives, and how you are utilizing it will determine whether your team is winning or not. अगर पहले बैटिंग की बात करें, सो डेफिनेटली स्विंग नहीं है, लेकिन यूजली फर्स्ट बैटिंग करते हुए पिच थोड़ी स्लो स्लगिश प्ले करती है और बॉल थोड़ी रुक के आती है. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू स्कोर maybe 300 or 320, 350. Or अगर आपने if you scored anywhere between 270 to 80, definitely that will not be enough in second inning अगर chasing team ने पहले half an hour 1 hour संभल के खेल लिया. तो इसलिए ये दोनों तरफ से I mean दोनों वे से it works.
and both the captains are pretty astute. If you talk about Kane Williamson, he's very sharp and he has a lot of experience in Indian condition. IPL वो हर साल खेलते हैं as a captain, as a player, and he has played a lot of matches in one khade as well to have a clear understanding what to expect. Similarly, रोहित शर्मा तो है ही मुंबई से, आई मीन वो वन खाड़े से हैं और उनकी कैप्टन भी अमेजिंग है इस टूर्नामेंट में, नॉट ओनली इन दिस टूर्नामेंट, जब से हैं काफ़ी अच्छी एक कैप्टनसी कर रहे हैं. सो डेफिनेटली ये देखना होगा, एंड आई एम श्योर बोथ द टीम्स, बोथ द कैप्टन्स आर नॉट थिंकिंग अबाउट टॉस. दोनों के पास अपने प्लान्स होंगे जो वो दे वांट टू एग्जीक्यूट अगर वो इवन इफ दे लूज द टॉस. टॉकिंग अबाउट लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड फर्स्ट. अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें सो डेफिनेटली उनका जो स्ट्रेंथ है करेंटली उनकी बैटिंग. आई मीन टॉकिंग अबाउट द बैटिंग, रचिन रविंद्रा हो, केन विलियमसन हो, ग्लेन फिलिप्स हो, डैरन मिचेल हो, बहुत अमेजिंग फॉर्म में, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है. और दे हैव अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स जो काफ़ी डिसेंट प्लेयर्स हैं. आई मीन यू टॉक अबाउट मिच सैंटनर, अगर वो जीवी निशंक को खिलाते हैं वो, तो उनकी काफ़ी लंबी बैटिंग ऑर्डर है. अगर हम बॉलिंग की बात करें सो डेफिनेटली देयर बॉलिंग वाज स्ट्रगलिंग, स्पेशली देयर मेन वेपन ट्रेंट बोल्ट वाज नॉट एबल टू टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स, बट लास्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका he bowled amazingly well. I mean, he was the reason why New Zealand was able to win that match so convincingly. तो ये एक पॉइंट है. आई मीन न्यूजीलैंड की बॉलिंग अब धीरे धीरे इफेक्टिव हो रही है बिकॉज आई मीन वी शुड नॉट फॉरगेट देयर वर अ लॉट ऑफ इंजरीज इन देयर टीम. तो अब तीनों बॉलर चाहे लॉकी फर्ग्यूसन हो, टिम साउदी हो या ट्रेंट बोल्ट हो, दे आर लुकिंग प्रीटी इफेक्टिव. स्पिन डिपार्टमेंट में सैंटनर इज बॉलिंग गुड, ही इज प्रीटी डिसेंट. रचिन रविंद्रा भी डिसेंट हैं, और इनके पास बहुत सारा और बॉलिंग ऑप्शन, चाहे वो मिचेल हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो. तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है. अब आई एम श्योर New Zealand would love to bat first because ये उनकी strategy काफ़ी effective रही है, winning the toss, scoring big runs and then defending it. और not to forget अगर हाफ एन आवर की विंडो या एक घंटे की विंडो उनको मिल जाए उनके बॉलर्स को, सो बोल्ट कैन बी डिवास्टेटिंग. तो वो उस चीज़ का बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे. Talking about India, of course, like I said earlier, that currently Indian team does not have any weakness whatsoever. They are playing amazing cricket. But एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो अब तक इंडिया इज एबल टू कवर इट अप, एंड दैट इज देयर बैटिंग लाइनअप. आई मीन दे हैव 7 गुड बैट्समैन, बट 8, 9, 10, 11 जो 4 बैट्समैन है, दे आर, आई मीन ऑल ऑफ देम आर लाइक 11 नंबर बैट्समैन. सो जो टेल है वो कैसे कितने इफेक्टिवली खेले, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ऑल्दो अगर आप देखें तो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके, ओनली बिकॉज ऑफ द टेल इंडिया वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 229 रन्स. तो इंडियन कंडीशन में फिर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन एटलीस्ट होल्ड अप वन एंड और दूसरे एंड से कोई एस्टैब्लिश बैट्समैन खेल सकता है. सिमिलरली बॉलिंग में भी, ऑल्दो हमने लास्ट मैच में देखा दैट रोहित शर्मा गेव बॉलिंग to Virat Kohli, to Surya Kumar Yadav, Shubman Gill, उन्होंने खुद बॉलिंग की because he was trying to get options for 6th bowler. इन सब में I mean ऐसा नहीं है कि all 4 did not bowl good, they were decent, but उनमें से कोई बहुत इफेक्टिव नहीं लगा. Of course रोहित शर्मा ने सिर्फ 4-5 बॉलर डाली और विराट कोहली ने 2 ओवर डाले, बट अगेन नथिंग अगेंस्ट नीदरलैंड, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप. तो वो थोड़ा शायद फैक्टर काम कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट. बाकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई एम श्योर दे विल जस्ट कीप देयर एयर शट, दे विल कट डाउन द आउटसाइड नॉइज. आई एम श्योर राहुल द्रविड़ और मैनेजमेंट बहुत टाइम से इस मैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक इंडिया का सेमीफाइनल खेलना वॉज ऑलमोस्ट, आई मीन देयर वॉज नो डाउट दैट इंडिया विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल कंसिडरिंग इंडिया में मैच हो रहे थे और इंडिया की फॉर्म जैसे थी, 9 में से 6-7 मैच जीतना उनके लिए टफ नहीं था, बट इंडिया सरप्राइज एवरीवन एंड वन ऑल द 9 मैचेस. सो आई एम श्योर
राहुल द्रविड़, चाहे वो मेंटल लेवल पे प्रिपरेशन की बात हो या सारे प्लेयर्स की बात हो, दे आर मेंटली दे आर नाउ रेडी. और टॉकिंग अबाउट नॉकआउट मैचेस, अभी इंडिया ने एशिया कप जीता है वेयर दे डिफीटेड श्रीलंका इन द फाइनल्स. उससे पहले IPL में मैक्सिमम ये सारे प्लेयर्स नॉकआउट मैचेस खेल चुके हैं. सो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस of playing in the knockout, and वो उस चीज़ का benefit उठाएंगे. And definitely we are going to see a cracker of the contest. See, the bottom line is अगर India cannot cannot survive in knockout, so let it be. At any given point of time, I'm sure पूरी पब्लिक एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल में पहुंचे या ट्रॉफी जीते. इट शुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट. एंड एज वी नो, न्यूजीलैंड्स आर, आई मीन, आप चाहे उनकी कैसी भी टीम हो, दे ऑलवेज गो एंड दे प्ले, दे पंच अबव देयर वेट. सो डेफिनेटली डोंट गो बाय देयर टीम ऑन पेपर्स. ऑन ग्राउंड दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट बीस्ट. सो इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर कॉन्टेस्ट. कल ही मैच होने वाला है. कल हमें अपना पहला फाइनलिस्ट मिल जाएगा इस वर्ल्ड कप का. And then on Thursday we have again a match against between Australia and South Africa. So that's all in today's session. Talking about we discuss about what to expect in the matches in tomorrow's match. Close अगर हम बात करें, so इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा ट्रेंट बोल्ट, स्पेशली अगर वो सेकंड बैटिंग करती हैं. और जो बैट्समैन है जिससे इंडिया विल बी प्रीटी वेरी, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा वो होगा केन विलियमसन. विदाउट डाउट रचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेल रहे हैं. विदाउट डाउट मिचेल इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन. बट केन विलियमसन का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट, ही इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट थ्रेट. बिकॉज दे नीड अ बैट्समैन हु कैन होल्ड द इनिंग फ्रॉम वन एंड. और अगर आप देखें इंडिया का जो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था इन धर्मशाला, यही चीज़ मिसिंग थी. नो वन वॉज एबल टू होल्ड वन एंड जिसके कारण दे लॉस्ट द मैच. सो as far as New Zealand is concerned, I mean, everyone is a threat, but definitely they will be very of mohammed Shami, जैसे वो बॉल स्विंग कर रहे हैं, और कुलदीप यादव. and batting में definitely they would like to avoid विराट कोहली and रोहित शर्मा जो बहुत अच्छी ओपनिंग दे रहे हैं. So that's all in today's episode. Please like this video and subscribe to my channel. And all of you have a great day ahead. Bye. Take care.